Everyone, I'm Yamini. We are talking about class 9, subject science, chapter number 10, gravitation. So, we are done with the gravitation, we are done with the universal law of gravitation, we have derived the importance of the universal law of gravitation, we have talked about free fall, and we had done with the calculation of the value of g as well. So, today we have to start it from the motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. So what is there? There is an activity in which what happens that लाइक आपको एक शीट ऑफ पेपर और जो स्टोन है वो दोनों ही एक साथ एक बिल्डिंग्स के फ्लोर से नीचे गिराने हैं. देन यू हैव टू वॉच दैट कि इनमें से कौन सा जो है वो जल्दी नीचे पहुंचता है, और इस तरह से आपको जो ये वाला एग्जाम्पल है वो परफॉर्म करना है. व्हेन यू डू दिस एक्सपेरिमेंट, और व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी आर नोइंग फ्रॉम दिस एग्जाम्पल और दिस एक्सपेरिमेंट दैट how the free fall or the acceleration which an object experiences, it all occurs. Okay, so we are talking about the acceleration experienced by an object which is independent ऑफ इट्स मास. जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हॉलो हो या सॉलिड हो या फिर बिग हो या स्मॉल हो या वो जैसा भी उसका अमाउंट हो, वो सेम रेट पर ही फॉल करेगा. फ्री फॉल में उसकी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मायने रखती है. So, according to a story, Galileo dropped different objects from the top of the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same. So, Galileo Galilei जो थे उन्होंने भी सेम चीज़ करी. लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में है, वहाँ से उन्होंने अलग अलग चीज़ें जो है वो ड्रॉप करके देखी. एंड ही concluded that G is constant near the earth. All the equations for the uniformly accelerated motion of objects become valid with acceleration A replaced by G. तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये जो तीनों हमारी लॉज ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है वो सभी यहाँ पर आ जाती हैं. दीज ऑल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जहाँ पे u जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी और जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है. एंड इस जो हमारा s है यहाँ पे वो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है, और t इज़ यूज्ड फॉर द टाइम ओवर हियर. सो इन applying these equations we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of the velocity. acceleration को हम positive कब लेंगे? जब वो velocity की direction में होगी. ओके, सो अगर इसके अपोजिट में होगा then we will take it negative. तो हम उसको acceleration को जो है वो negative लेंगे. ओके, सो ये एक इसका फंडा है इसको समझने का. इसके बाद आप ये एग्जाम्पल कर सकते हैं. देखेंगे एग्जाम्पल 10.2 में क्या है. अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स अ ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड. सो लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन जो है हमने जी को 9.8 ना लेकर हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया. देखो ये हम कब लेंगे? सिर्फ तभी जब हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा. हम अपनी तरफ से इसे 10 नहीं लेके कर सकते हैं. जो वैल्यू है वही लेके करेंगे. अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हम इसे जो क्वेश्चन में मेंशन वैल्यू है उससे करेंगे. ओके, जैसे यहाँ पे 10 है. सो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें देखना है व्हाट इज़ इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम जो वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 10.10 जो कि है v इज इक्वल टू ए उसके अंदर फिल करेंगे. देन जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है दैट जो सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड. तो इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे. एवरेज स्पीड क्या होता है? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2, तो वो निकालेंगे हम. देन नंबर 3 जो है, हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड. ये कितना हाई है, तो ये हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? उसकी हम जो एस निकालेंगे डिस्टेंस, यानी कि 10.11 जो हमारे पास इक्वेशन है उससे निकालेंगे. ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है. देखो टी जो है उसकी वैल्यू हमें हाफ सेकेंड दी हुई है यहाँ पे 0.5 यानी कि हाफ सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारे पास. एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है हमें. और जो कार है उसकी अगर हम पॉजिटिव देखें क्योंकि वो डाउनवर्ड्स आएगी तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे जो कि होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको इन फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है. देन यू विल गेट द आंसर्स. Like its speed on striking on of
the ground, and then its average speed also in that particular 0.5 second, and the height of the ledge from the ground as well. Let us see the example 10.3. इसमें क्या करेंगे, an object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 meter. Calculate velocity. Velocity के लिए देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, द थर्ड इक्वेशन 10.12 वाली जो है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज़ करेंगे. देन सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है हमें, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. अब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाना है तो कौन सी इक्वेशन, 10.10 इक्वेशन. दैट मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस 80. इसमें देखेंगे क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है. डिस्टेंस ट्रैवल हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगी. देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम अपवर्ड उसे थ्रो कर रहे हैं तो हम इसकी नेगेटिव लेंगे, राइट. तो नेगेटिव लेंगे तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इन फॉर्मूलेज के अंदर हमें इसको वैल्यूज पुट करनी है. देन वी विल गेट आर initial velocity and the time taken. Okay, so this is how you have to do this. If you feel any query or any kind of doubt in these numericals, just write it down in the comment box. I will get back to it. Question number 1, what do you mean by free fall? So for that answer, what you can do is you can just write it down from here. Like what is the free fall? It is the condition when an object whether it is solid or high or we can say hollow or big or small, it will rate at the or fall at the same rate. Okay, so from this paragraph you can write it down. Okay, and for the example purpose you can mention this thing. Okay, now let us see the second question. What do you mean by acceleration due to gravity? So for that, acceleration due to gravity, what you can write down, you can just go through this one where we were talking about that g is used as acceleration due to gravity. So this portion you can write it down. The acceleration is due to the earth's gravitational force, therefore it is known as the acceleration due to gravity. And what is its unit? Its unit is meter per second square. So this is how you can do this. Okay, now let us come to the next page. So mass and weight. So mass and weight, basically what is the difference between them? Mass is something which is there inside the object. Okay, and weight is the force which is exerted by the gravity, right? So this is the main difference between them. So we all know about the inertia, and there is one important point in this paragraph, that greater the mass, the greater is the inertia. So it remains the same whether the object is on the earth, the moon, or even the outer space. तो आपका जो mass है that will remain constant, but the weight will vary from one place to another. Like it is 1/10 to the earth on moon, right? So the mass of an object is constant and does not change from place to place. So greater the mass, greater will be inertia, number one thing. Number two thing is it remains same all over the universe. It does not change, it remains constant. So these two things. Now let us come to the weight now. So in weight, what happens? This force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity. As I have mentioned, it is the force which is exerted by the gravity. The weight of the object is the force with which it is attracted towards the earth. So we all know about the force. Force is the force is equal to F is equal to ma, and where a stands for acceleration due to gravity, which means F is equal to mg. Right? So this force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object, जो कि हम substitute कर सकते हैं by W. So we can write it down. W is equal to mg. Right? So now, as the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the SI unit of the weight will be remain same as that of the force. What was it? It was Newton. So the weight is a force acting vertically downwards. It has both magnitude and direction. Okay, but the mass only has its
one thing, but it has both magnitude and direction. So we have learned that the value of g is constant at a given place. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass. Let's say m of the object. So now what we are going to do, we are deriving an expression for the weight of an object on the moon. So what we are considering over here, we are seeing that it is due to this reason that at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass. The mass of an object remains same everywhere, that is on the earth and on any planet, whereas its weight depend on its location. It is the same thing which I have shared with you just now. So now let us come to weight of an object on the moon. So what we are going to do, the weight of an object on the earth is the force with the which the earth attracts the object. In the same way, weight of an object on the moon will be the moon attracts the object, that particular force through which moon is attracting an object, right? So the mass of the moon is less than that of the earth. This we all know that कि जो mass है moon का वो less है earth से. तो ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स लेस फोर्स, तो इसकी वजह से उसका फोर्स भी लेस होगा. सो लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m. हमने जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिया है वो हमने लिया m. सो लेट इट्स वेट ऑन द मून बी w, और ये छोटा सा हमने यहाँ पे m लगाया, दैट इज़ फॉर द मून. सो लेट द मास ऑफ द मून बी, इसका मास अगर हम लेंगे देन विल बी this is the weight, this is the mass of the moon, and its radius will be rm. Okay, so by applying the universal law of gravitation, हमें पता है universal law of gravitation का क्या formula है. It is F is equal to g m m और on में distance between the two, right, उसका square. So similarly इन values को जो है हम इस formula में put करेंगे. When we do that, then what we will get F is equal to g, that is a gravitational constant again. Okay, so mm upon में r square. Take notice or take this in consideration that r square and the other values which we are taking of moon right now. Okay, so let the weight of the same object on the earth be we. So now we are comparing both, okay, on earth and on moon. So let us come to this one now. So the mass of the earth is capital M and its radius is r. So अर्थ पे क्या होगा और मून पे क्या होगा, बोथ आर द सेलेस्टियल बॉडीज. सो मास इन kgs and radius is this in meters. So this would be helpful for you in the numerical purpose, although it will be given to you in the question also, but for the purpose of knowledge you can learn this also. So from this equation, substituting these values from the table, what we will get in the end, we will substitute all these values of m, of r, of moon and of earth, both we will write it down and we will get, and in the end what we will do, we will divide both of them. Okay, first हमने moon का निकाला, then हमने earth का निकाला, and then we will divide both of them. Then what we will get, weight of the object on the moon upon weight of the object on the earth, it will be 1/6. So it is the 1/6 of the weight on the earth. Like अगर आपका वेट जो अर्थ पे है वो लेट्स से कि वो 60 है, तो मून पर इट विल बी 10 only. Okay, so this is how it works. Now let us come to the next one. So here we have an example. इस एग्जाम्पल में देखेंगे, these are also very simple. Mass of an object is 10 kg. What is its weight on the earth? So what you have to do, you just have to put the formula. W is equal to mg. M you know, that is 10, and g also you know, 9.8 meter per second square. We have to just put the value and we will get the answer, 98 Newton. Now let us come to example 10.5. 10.5, an object weighs 10 Newton when measured on the earth's surface of the earth. What would be its weight when measured on the surface of the moon? So what it will be, what we have to do, we have to just write it down that this particular formula, the weight of the object on the moon is equal to 1/6 of the weight of its weight on the earth. So what we will write, Wm is equal to We upon 6. Why we are writing 6? Because it is 1/6, that is why.
So 1/6, then we will have 10 upon 6, and as a result, or in the answer, we will write it down 1.67 Newton. So this is our answer. Now let us see the question. What are the difference between mass of an object and its weights? I have just said it to you कि क्या क्या difference है. फिर भी from where you can write it down, you can take it from here in this paragraph and in this paragraph. Okay, now let us come back to second question. Why is the weight of an object on the moon is 1/6 its weight on the earth? So for this, what you can do is you can take a reference of this one, this paragraph and this table. Okay, क्योंकि जो weight है वो moon का जो मास है वो कम है, सिमिलरली जो अर्थ से कम है, तो उसी के हिसाब से जो है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो भी कम है. ओके, तो आप इन दोनों, ये इस टेबल और ये जो पैराग्राफ है, इसको आप ऐड ऑन करके आंसर फॉर्म कर सकते हैं. Now in the next class we will do thirst and pressure. Till then you can read it till here, and if you feel any query regarding this, then you can write it down in the comment box. Till then, goodbye, take care.